7, 8 करें, that would be the good part of learning these things from one fora to bring it to the other forum. Thank you very much, ma'am. So again, for the fundamental duties, and I think that the first question which may come to your mind is what is the duty in simple terms? क्या है ये ड्यूटी? क्यों हम ड्यूटी की बात कर रहे हैं? अभी तो हम राइट्स की बात कर रहे थे. And we all know that in our country we are all living in a right based society. ज्यादातर हम राइट्स की ही बात करते हैं, हम अपनी ड्यूटी की बात कभी नहीं करते. जैसा कि अभी आप ही के बीच में से एक पार्टिसिपेंट ने कहा कि किस तरीके से उनके जो नेबर्स हैं वो इस तरीके से जो काम कर रहे हैं और उनका अपना फंडामेंटल राइट है, ह्यूमन राइट है, उसको वायलेट कर रहे हैं. सो द point here is that in simple terms we see that it is something like performing a duty in different capacities. As a teacher, student, as an employer, employee, as the parents, children, as between a spouse. So there are different types of the duties which are related to a single person. आप अपना अकेले एक टीचर की तरीके से आपकी ड्यूटीज हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए, आपका अपना एक एम्प्लॉय की तरीके से एम्प्लॉयर्स के प्रति भी आपकी कुछ ड्यूटीज हैं, एक पेरेंट्स के नाते आपके चिल्ड्रन के प्रति कुछ ड्यूटीज हैं, एक वाइफ और हस्बैंड होने के नाते आपके स्पाउस के लिए कुछ ड्यूटीज हैं. सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ड्यूटीज एंड वी सी दैट दीज ड्यूटीज आर सेड टू बी कोरिलेटिव विद द राइट्स. ड्यूटीज जो हैं वो नॉर्मली अलोन जो हैं अकेले नहीं चलती, उनके साथ कहीं ना कहीं कोरिलेटिव राइट्स भी होते हैं. अगर मेरा अधिकार है कि मैं सड़क पर अपना आराम से चलूं, तो जो दूसरे आ रहे हैं उनकी ये ड्यूटी बनती है कि वो मुझे किसी तरीके से डिस्टर्ब ना करे, जिससे कि मैं अपना पीसफुली जा रही हूं तो कोई मुझे अननेसेसरी हिंडर ना करे, रोके. सो ड्यूटी इज द कोरिलेटिव ऑफ ए राइट. Which can be understood as an obligation to do something, or it is an act whose opposite can be said to be a wrong thing. That if I'm not performing my duty, it means that something wrong I'm going to commit. And whenever the law ascribes any duty to a person, then there is a corresponding right also, a correlative right also that exists with the person upon whom the duty is imposed. कि किसी एक पर अगर ड्यूटी इम्पोज की गई है तो दूसरे व्यक्ति पर उससे रिलेटेड एक राइट भी जरूर होगा. And this is known as the correlative duty. But besides the correlative duties or relative duties or corresponding duties, there are some duties which are said to be absolute duty, जिसके कि अगेंस्ट में कोई रिलेटिव राइट नहीं होता है. तो एक ऑस्टिन थे, ज्यूरिस्ट थे, उन्होंने दो तरीके की ड्यूटीज की बात कही थी. एक रिलेटिव ड्यूटी की बात कही थी जिसके लिए करस्पॉन्डिंग राइट होता है, और एक एब्सोल्यूट ड्यूटी की बात कही थी कि जिसके अगेंस्ट में एक कोरिलेटिव कोई राइट नहीं होता है. सो दिस टाइप ऑफ द ड्यूटीज लाइक ड्यूटीज टुवर्ड्स द गॉड. We are always living in a theological society or religion. We are having there, we have a fundamental freedom or human right to religion. तो अपना एक religious right है, तो गॉड के प्रति भी हमारी कुछ ड्यूटीज है, बिकॉज देयर कैन नॉट बी एनी रिलेटिव ड्यूटी टुवर्ड्स. इफ आई एम हैविंग अ ड्यूटी टुवर्ड्स माय गॉड दैट आई विल बी worshipping the god or I'll do something, then I cannot expect a right from the god that he would have some right that I should do that. This is my duty, which is absolute duty. Or duty towards some intermediate persons or the public at large, कि एक large public के लिए मेरी कोई ड्यूटी हो सकती है. That is I should not commit a nuisance. कुछ मुझे ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि जिससे nuisance create हो. सोसाइटी में रह रहे हैं, सोसाइटी में बहुत सारे लोग रह रहे हैं, कुछ बीमार हैं, कुछ बच्चे हैं, किसी के घर कोई काम चल रहा है, तो मेरी ये ड्यूटी बनती है कि मैं अगर अपने घर में कोई काम कर रही हूँ तो दूसरे को मेरे शोर शराबे से, मेरे नुइसेंस से, मेरे ऐसे काम से किसी को कोई नुकसान ना हो. मैंने अपने घर में एक पेड़ लगाया फॉर एग्जाम्पल, ये मेरा राइट है, लेकिन साथ ही साथ मेरी ये ड्यूटी भी बनती है कि मेरे पेड़ की ब्रांचेस जो हैं वो दूसरे के घर में जाके वहां गंदगी ना करे, उसको परेशान ना करे, उसको निकलने बैठने में परेशानी ना हो. मैं अपने घर में अगर टीवी रेडियो चलाकर बैठी हुई हूँ
तो वो मेरे अपने सुनने तक सीमित रहे, इससे बाहर जो दूसरे लोग हैं, आसपास के जो लोग हैं, उन्हें किसी तरीके की कोई नुकसान ना हो या उन्हें उससे परेशानी ना हो. So that is my duty, which is said to be an absolute duty, because this is related to some persons who are indeterminate, जिसको हम अभी पहचान नहीं रहे, क्योंकि सड़क पे चलते हुए लोग भी हो सकते हैं, and there may be public at large, कि एक मकान के इस तरफ भी रह रहा है, उधर भी रह रहा है, हम सामने सामने रह रहे हैं. So the duty that is related to this indeterminate persons or to the public at large, which is an absolute duty, maybe like not to commit a nuisance, not to create the noise, or not to get upset to the other person. So this is one of the duty which is said to be an absolute duty. Then self-regarding duty, हमारे अपने लिए भी हमारे कुछ duties हैं, such as the duty not to commit suicide. We have got a life and we have a right to life, but with this we have a duty also that we should not commit suicide. हमें अपनी आत्महत्या करने की कोई ऐसा अधिकार नहीं मिला है. हमारी ड्यूटी है कि हम अपनी लाइफ को सेव रखेंगे. We have not to commit something like that, or we have a duty not to become the intoxicated, कि हम अपने आप को intoxicate नहीं करें. So because these are having certain legal sanctions, अगर हम इस तरीके की चीजें करते हैं तो उसके लिए as an offense हमको कोर्ट के सामने जाना पड़ेगा, हमें punishment मिल सकता है. So we have a self-regarding duties also. Then duties towards the state, duties towards the sovereign, that is also an absolute duty. हमारी एक duty है that if we are getting the money, if we are earning the money, if we are getting these things, then we have a duty towards the state to pay the taxes. हमें अपना tax payment करने की duty है state के लिए. We have a duty not to commit any crime. हमारी duty है कि हम कोई crime ना करें. So the duties may be relative duty, where you see that which is related to or corresponding with having a corresponding right. But there are certain absolute duties which do not have the corresponding rights, and without having the corresponding rights, there may be certain legal sanction for those duties. उसके लिए कुछ legal sanctions भी हो सकते हैं, जैसे crime commit कर रहे हैं या income tax act आ गया, आपकी ड्यूटी है टैक्स जमा करेंगे लेकिन टैक्स नहीं कर रहे हैं तो आपके ऊपर समन आ सकते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से लेटर्स आ सकते हैं वगैरह वगैरह. तो दिस इज योर ड्यूटी. Then these duties may be like the rights may be positive duty, that may be negative duty. Positive duty when the law obliges us to do an act, whereas the negative duty when the law says that you do not do that act, you are refrained from doing that act, कि आप ऐसा कोई काम नहीं करेंगे, वो नेगेटिव टर्म्स में है. आपकी पॉजिटिव ड्यूटी है कि आप ऐसा काम करेंगे, लीगल सैंक्शन है उसके पीछे तो वो आप करेंगे. इसके साथ साथ कुछ मॉरल ड्यूटीज होती हैं, कुछ लीगल ड्यूटीज होती हैं. सो ए लीगल ड्यूटी विच इज इम्पोज्ड बाय अ स्टैट्यूट विच इज इम्पोज्ड बाय द एक्ट, जो एक्ट के द्वारा लगाई गई हैं आपके ऊपर, वो लीगल ड्यूटी है. लेकिन कुछ मॉरल ड्यूटीज भी हैं, उसके पीछे कोई लीगल सैंक्शन नहीं है, बट दैट इज अ ड्यूटी एंड दैट इज डिपेंडेंट ऑन द डिस्क्रिशन ऑफ द पर्सन कंसर्न्ड, वेदर he or she performs that moral duty or not. For example, if a child is drowning, एक बच्चा है और वो पॉन्ड में तैर रहा था, तैरते तैरते वो डूबने लगा और वो चिल्ला रहा है हेल्प हेल्प. जो पास में लोग खड़े हुए हैं, इन केस वो सुन भी लेते हैं कि बच्चा चिल्ला रहा है, सो दिस इज द मॉरल ड्यूटी that if you want to save then you can save, but you don't have any legal duty, क्योंकि आप उसके बीच में नहीं आए हैं, आपने उसको धक्का नहीं दिया है, वो बच्चा डूब रहा है. तो if you save the child, this is your moral duty, but there is no legal sanction behind that duty. So if you are not performing that moral duty, you are not going to be punished for not performing that moral duty. And the difference between legal and moral duty is that in legal duty, if you are not performing your legal duty, then you can be punished for that. But in a moral duty, if you are not performing, you cannot be punished for that. For example, a blind person, कोई व्यक्ति है जो देख नहीं सकता है, वो सड़क क्रॉस कर रहा है, बहुत ट्रैफिक है सड़क पर और वो चाहता है कि उसको सड़क पार करना है, लेकिन परेशानी हो रही है, आसपास भी लोग खड़े हुए हैं.
लोग उसको एक मॉरल ड्यूटी समझ के उसको हाथ पकड़ के सड़क क्रॉस भी करा सकते हैं, और अगर नहीं करा रहे हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज this is the moral duty behind which there is no legal sanction. And some of the moral duties are also becoming the legal duties now. For example, जैसे पेरेंट्स को मेंटेन करना, पेरेंट्स के मेंटेनेंस के लिए अगर हम बात करते हैं, सो दैट वाज द मॉरल ड्यूटी ऑफ द चिल्ड्रन, कि हमारे बच्चे जो है अपने माता पिता, बूढ़े माता पिता का ख्याल रखेंगे, उनको मेंटेन कराएंगे, उनको उनको जो भी भरण पोषण है उनका किस तरीके से रहते हैं उसका पूरा ख्याल रखेंगे. दैट वाज द मॉरल ड्यूटी अर्लियर, बट since 2007 the law has passed, because the moral values now in the society, those are being changed. वो चेंज हो रही हैं. उसमें जो हमारा इंडियन कल्चर का जो एक सेक्युलर एथोस था वो अपने आप में बहुत ज्यादा चेंज होने लगा है. सो दैट वी फाइंड दैट the maintenance to parents that was once a moral duty is now becoming a legal duty, because there is the law, and the duty is on the children to maintain their parents. So that is now become a legal duty. Similarly, कॉपीराइट, अगर हम कॉपीराइट की बात करते हैं, और आप सभी लोग क्योंकि एकेडमिया से रिलेट करते हैं, पब्लिकेशन भी होते हैं, पेपर्स भी लिखते हैं. अभी कुछ लोगों के क्योंकि ये फैकल्टी इंडक्शन है तो कुछ लोग नए होंगे, हो सकता है पीएचडी भी कुछ लोग कर रहे हों, अभी कंप्लीशन पर हो, तो कॉपीराइट के बारे में भी जानना जरूरी होता है कि किसका हम कितना मटेरियल अपने वर्क में, अपने रिसर्च वर्क में यूज कर सकते हैं, प्लेजरिज्म में तो हम नहीं फंस रहे हैं, या क्या जो भी चीजें हैं. सो दीज आर दी मॉरल ड्यूटीज अर्लियर, कि हम किसी की चीज क्यों चले. प्लेजरिज्म इज समथिंग लाइक टू steal the others property, to steal the others things. That is, copyright is the intellectual property right, and it is related to the intellectual of the other person, कि हम दूसरे व्यक्ति ने कुछ अपना काम किया और उसको अपना बना के without giving any acknowledgement, without recognizing that person. So that what we are doing is that we are just using the work of the other person as our own. So the moral duty is that we should not do that. We should not steal others' work. We should not, because this is a clear theft. ये अपने आप में सीधी सीधी चोरी है. So we should not do that. But by virtue of this plagiarism rules of 2018 by the University Grants Commission, that has become a legal duty now. That now if you are not acknowledging the others' work in your work, then there are provisions for the penalty and punishment also. इंक्रीमेंट रुक जाएंगे, आप अपना पेपर पब्लिश नहीं कर सकते हैं, अगर कोई डेजर्टेशन आप जमा करवा रहे तो उसमें कितना परसेंट आपका प्लेगरिज्म में आता है. सो all these things are there. So the point here is that moral duty and legal duty, these are the types of the duties. Legal duties are those duties behind which a legal sanction is there, and if you don't perform that duty, you can be punished. In moral duty, if you don't perform that duty, you cannot be punished because there is no law on that. फूल मत तोड़िए लिखा होता है ना, फूल मत तोड़ो, बागों में कहीं लिखा है, या लाइट खुली हुई है या पानी खुला है. This is your moral and ethical duty, that the things should not be wasted. हमारा जो एक नेशनल प्रॉपर्टी है वो वेस्ट ना हो. तो इस तरीके की कुछ चीजें हैं that we have to perform by our own self. Then of course coming to the fundamental duty, that is also one of the duty, and these are the duties which are imposed over the citizens of the country, and the citizens have these duties towards their nation as well as towards the Constitution of India. As I told you earlier also, Constitution is the supreme law of the land, and the duties, fundamental duties are towards the nation as well as towards the Constitution also. So in the Indian context, if we see, then we'll find the duties are not having, the duties are having the ancient concept also. It's not only the fundamental duties, which is the part of the Constitution,
only then we have come to know that the duty is something. But we find that in our Indian culture, there are certain duty concept also. And in Bhagavad Gita, everybody must be aware about that duty. कि कर्म किए जाइए, अब फल की इच्छा ही मत कीजिए, कर्मण्येवाधिकारस्ते. Everybody must be aware about that. To do your duty is your right only. So to that extent, perform your कर्तव्य, अपने कर्तव्यों का पालन करें. To do your duty and duty only, right will follow you. So these type of the ethos were already available in our Indian democratic and tradition and in our ancient time. And on that basis, we can say we are having the different type of the duties. So freedom fighters of our country, when they fought for the independence, they fought for the emancipation of the motherland. We call that Bharat Mata. So they also realized the importance of the duty. उनको अपनी ड्यूटी के प्रति जागरूकता थी कि अगर हमारा देश गुलामियत में है, हमारा देश दूसरे लोगों के कब्जे में है, तो उसको कैसे स्वतंत्र कराना है, कैसे उसको एमेंसिपेट कराना है, कैसे इंडिपेंडेंस लानी है. So all these are the concepts which we can find that that was the duty oriented society through which we got our independence also. Then besides that, if we see that the fundamental duty concept in our constitution, then we find that the time period when our constitution was being drafted, that was 9th December 1946 to 26th November 9th December 1946 to 26th November 1949. लगभग 2 साल 18 महीने कुछ इस तरीके का 18 दिन का समय था कुछ उस समय जिसमें हमारा संविधान बनाया जा रहा था. And that was the time also when the Universal Declaration of Human Rights were also drafted. And that was the time which was also the post-World War II time. So at that time, the point which was being discussed, debated in the Constituent Assembly in India also, that to take more and more right-based society, we should have more and more rights, but not the duties. So you see that the Constitution of India in its original form, which was enforced in 1950, 26 January, that was not consisting of duties. उसमें fundamental duties नहीं थी, उसमें केवल fundamental rights की बात कही गई थी. क्योंकि उस समय क्या सब चल रहा था, क्योंकि जो सराउंडिंग सिचुएशंस थी उसमें एक ह्यूमन राइट की बात चल रही थी, एक राइट बेस्ड सोसाइटी की बात चल रही थी. हमारे पास जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट चल रहा था उसमें कोई राइट्स नहीं थे. तो एक राइट्स के डिस्कशन में जाते हुए जो हमारा संविधान बना ओरिजिनल, उसमें कहीं पर भी ड्यूटीज नहीं थी. एंड this was only in 1976 by the 42nd amendment to the constitution that a new chapter was inserted as fundamental duties in the Constitution of India. So what we see is that it is not that the Indian Constitution is having the fundamental duties, but otherwise also the constitutions of the other countries like China and Japan, that they are having the fundamental duties in their constitution. And we have borrowed the fundamental duties from Russian constitution, USSR, and Yugoslavia, and many small countries. They were all having the fundamental duties in their constitution, but we in India were not having the fundamental duties in the Constitution of India. So fundamental duties, why you people are set to learn or to be aware about that duties, is just to create the awareness as to what are those fundamental duties, and you should appreciate and you should internalize the concept and the practice of fundamental duties, because this is the part of the Constitution of India now. तो आप लोगों को fundamental duties क्यों पढ़नी चाहिए, आप लोगों को fundamental duties का ये इंडक्शन प्रोग्राम में क्या महत्व हो सकता है, आपको क्यों जागरूकता इसके बारे में दी जा रही है, so that at least you may be aware about what are the fundamental duties and how
you can further circulate and you can further disseminate these duties in the others also, and particularly because you are all teachers. So in your direct contact, the students would be there, and you can teach to your students that these are the duties which you should also follow as a citizen of the country. Because once again, one thing which is similar to the human rights and fundamental duties are that both are unenforceable in the court of law. दोनों को ही कोर्ट में एनफोर्स नहीं कराया जा सकता है. बोथ आर नॉन जस्टिसेबल बिकॉज ह्यूमन राइट्स are the declarations at international level, not enforceable, not binding, and these fundamental duties part of the Indian Constitution, but they are also put as non-justiciable or unenforceable. Unenforceable का मतलब कि किसी भी तरीके से उसको कोर्ट में लागू नहीं कराया जा सकता है. अगर कोई अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहा है तो कोर्ट में ये कहा नहीं कि केस लेके नहीं जाया जा सकता है कि वो ये जो ड्यूटी लिखी हुई है संविधान में ये इसको वायलेट कर रहा है या ये इसको फॉलो नहीं कर रहा है तो इसको किसी भी तरीके की सजा दी जाए. तो देयर इज नो बाइंडिंग नेचर ऑफ दीज फंडामेंटल ड्यूटीज. दीज आर नॉट एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट ऑफ लॉ, एंड दैट्स हाउ you see the unenforceability of the fundamental duties in the Constitution of India. But as I told you that these duties were not in the original Constitution, then what was the problem? What was the situation at that time? What was the condition? Why these duties were brought and put in the Constitution of India? ऐसी क्या स्थिति हो गई, ऐसी क्या जरूरत थी, क्या कंडीशंस ऐसे आ गए कि जिसकी वजह से ये फंडामेंटल ड्यूटीज को संविधान का भाग बनाना पड़ा. So you see that during that emergency period 75 to 77, क्योंकि मैंने कहा कि 1976 में ये फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे संविधान का भाग बने. तो जो एक पहले इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी लगी थी, इंदिरा गांधी उस समय प्राइम मिनिस्टर हुआ करती थी, और उस समय 75 से लेके 77 तक की जो इमरजेंसी थी उस दौरान ये जो है फंडामेंटल ड्यूटीज को इसमें इनकॉर्पोरेट किया गया संविधान में. So the situation was that previously the party in power at center and state were the same. कांग्रेस पार्टी सेंटर में भी कांग्रेस पार्टी, स्टेट्स में भी, ज्यादातर स्टेट्स में भी होती थी. So धीरे धीरे the Congress party lost the power in some of the states, and particularly you see after 1967 general election, the state have got their own ruling parties at a regional level. Some more parties have come up, and then you see in national level emergency has been declared, and there was some internal disturbance on that ground. This was declared, and that was the time that prior to 1975 and 67, in between this time there were various strikes, dharnas, power grabbing, so many things that all have started. कॉन्स्टिट्यूशन में जो ड्यूटीज को जो एब्सेंट पाया जा रहा था कि अगर यहाँ पर ड्यूटीज होती तो शायद सिटीजन्स वुड बी बाउंड टू परफॉर्म दोज duties, or they should have some constitutional obligations not to do all these things. कि जब धरना स्ट्राइक होती है इस तरीके की तो जो नेशनल प्रॉपर्टी है, जो हमारे देश की संपत्ति है, उसको नुकसान पहुंचाया जाना, लोगों के साथ अलग तरीके का व्यवहार, तो ये सारी चीजें एक तरीके से बहुत ज्यादा होने लगी थी. एंड दैट्स हाउ द देन लॉ मिनिस्टर जो थे उस समय HR गोखले जी, so he insisted for the possibility of one of the chapter of on fundamental duties in the Indian Constitution, and that's how a committee was appointed in the chairmanship of Swarn Singh, Sardar Swarn Singh, and that committee has also recommended some of the fundamental duties. उन्होंने जो recommend किया, and finally some of the recommendations, not all, कुछ recommendations उनके follow करते हुए हमारे संविधान में भी ये फंडामेंटल ड्यूटीज आ गई. तो जो उन्होंने रेकमेंड की थी ड्यूटीज, उसमें से कुछ ड्यूटी ऐसी थी कि अगर वो हमारे यहाँ इस समय जो संविधान में जो 10 ड्यूटी हैं और 1986 के बाद 11 ड्यूटीज हो गई हैं, अगर वो भी ड्यूटी इसमें जोड़ी जाती तो मुझे लगता है कि शायद थोड़ा सा और अच्छा हो जाता, क्योंकि he has also introduced that these duties should be made enforceable. This is one, and to pay the taxes etc. that should also be a duty, and all the duties should be
enforceable. So these were the recommendations of the Sword Singh committee, which could take the shape of the fundamental duties in the Constitution of India. And Article 51A was inserted in the Constitution in Chapter 4A. जो हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, उसके बाद एक चैप्टर जोड़ा गया जिसमें कि 10 फंडामेंटल ड्यूटीज की बात कही गई. तो ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं ये किसकी हैं? सिटीजन्स की हैं, हर नागरिक की हैं. उनको क्या करना है? जो हमारा संविधान है उसमें जो भी कुछ लिखा है उसको अवॉइड करना है, उसको फॉलो करना है, अवॉइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड टू पे द रेस्पेक्ट फॉर द आइडियल्स एंड द इंस्टीट्यूशंस. जो हमारे इंस्टीट्यूशन है, पार्लियामेंट पे अटैक हो रहा है, दैट इज अ टेररिस्ट एक्टिविटी, बट हमारे जो संवैधानिक एक इंस्टीट्यूशंस हैं उनको कैसे रेस्पेक्ट किया जाए, जो हमारा नेशनल फ्लैग है उसका कैसे रेस्पेक्ट किया जाए, नेशनल एंथम है उसको रेस्पेक्ट करना, this is our fundamental duty. But you see that after every 15th August or 26th January, there are many of the persons who just purchase the flags, national flag जो बिकता है वो सब खरीद लेते हैं अपना, और 15 अगस्त और 26 जनवरी के बाद जब आप सेकेंड डे 16 अगस्त को और जब 27 जनवरी को जब आप सड़कों पे जाइए तो आप देखें नेशनल फ्लैग आपका सड़कों पे फिरता रहता है और वो झाड़ू लगा के उसको किनारे किया जाता है. So this is a duty of the citizen that if you are having that national flag with you, you should pay respect for that. And the not only the national flag but the national anthem also. जो हमारा राष्ट्रगान है उसकी भी हमें पूरा रेस्पेक्ट करना है. This is our duty. This is the first fundamental duty of every citizen. Then we have to cherish and follow the noble ideals which have been inspired the national struggle of the freedom. कि हमारे लोगों ने जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने कैसे अपनी जान को हथेली पर रखते हमारे देश को स्वतंत्रता दिलाई, उनके जो आइडियल्स थे उनको हम कैसे फॉलो करें, उससे किस तरीके से हम इंस्पायर हों. फॉर एग्जांपल अभी पीछे क्योंकि लता मंगेशकर जी जो एक बहुत अच्छी गायिका थी उनका निधन भी हुआ है और बार बार उनका गाया एक गाना बहुत दिखाया जा रहा था, ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी. So do you think that what comes to your mind when you listen this particular song? अगर आपने ये गाना सुना, बार बार सुना होगा, तो क्या दिमाग में चल रहा था? कुछ भावनाएं आ रही थी या नहीं आ रही थी? क्योंकि जब ये फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई कि every citizen should cherish and follow the noble ideals and have to aspire with the national struggle and the freedom fighters. So at that time it could not be understood that what would be the basic purpose of this duty, कि क्या पर्पस होगा इस ड्यूटी का, इसको कैसे फॉलो किया जाएगा, इसको हम कैसे इंस्पायर होंगे इससे. But to me that when I was listening to this song, I was just thinking that what would happen at that time, and not only at that time but presently also our freedom, our soldiers, they are there on the boundaries, they are saving ourselves. So how do we cherish all these things, and how do we have to be inspired by all these things? This is our fundamental duty, and this is what you also have to teach to your students, that this is a fundamental duty which you all should follow, which all you should be inspired because of this national struggle for freedom. And again, not only for the freedom at that time, but also to save our country from the other neighboring countries also, which our soldiers are doing now. Then another duty which we all citizens have in the Constitution as a fundamental duty is the obligation regarding to uphold and to protect the sovereignty and unity and integrity of India. कि बीच बीच में अगर आवाजें ऐसी आने लगती हैं, यहाँ खालिस्तान, वहाँ पाकिस्तान, और ये कश्मीर, और वो इस तरीके से बनाया जाए, तो being a citizen of the country, this is our obligation, this is our duty which is given in the Constitution to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of the nation. कि जो हमारे देश की एकता है, अखंडता है, जो हमारा संप्रभुता है, उसको पूरी तरीके से हम सेव करें, उसको अपहोल्ड करें, उसको प्रोटेक्ट करें. And in democracy where government is by the people, of the people,
for the people, then the sovereignty lies with the citizen. ये हमारे अपने आप में है, चुनाव में हम वोट डाल रहे हैं तो वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को वहां भेज रहे हैं. सो हमें अपने देश की एकता अखंडता को किस तरीके से प्रोटेक्ट करना है, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ आवर ड्यूटी विच इज मेंशन्ड एज ए फंडामेंटल ड्यूटी. देन हमें अपने देश के समय में काम करते समय कुछ नेशनल सर्विसेज होती है, तो उस नेशनल सर्विसेज को अगर अगर सरकार को हमारी जरूरत पड़ती है, अगर देश को हमारी जरूरत पड़ती है, देन बीइंग अ सिटीजन this is our duty to defend the country and render the national service. So when we called upon to do so, जब भी हमें बुलाया जाए तो हम सेवाओं के लिए तैयार रहें, ये हमारी ड्यूटी है. So because of the this attack from the neighboring countries, why only the military personnel, they should be there. So if there is a need, then as a citizen, we should always be open to go for and to render our national service. And this is not only to save the boundaries, but there may be some other types of the problems. For example, very recently and still today, because this online program is just an after effect of that problem, pandemic की वजह से ही हम लोग इस तरीके से मिल रहे हैं, ऐसे हम लोग के लेक्चर्स हो रहे हैं. तो during pandemic, if everyone or each one of us would have performed this fundamental duty as our national service, then there would be some difference also. क्यों केवल सोनू सूद या उनके जैसे कुछ लोगों को ही दिखाया जा रहा था कि वो अपनी ड्यूटीज परफॉर्म कर रहे हैं? कितने लोग ऐसे थे जिन्होंने ड्यूरिंग पैंडेमिक इस तरीके की ड्यूटीज को परफॉर्म किया? हम में से, आप में से इतने लोग थे, हर किसी के घर कुछ डोमेस्टिक मेट्स भी आते थे, कुछ काम करने वाले भी आते थे. how many of us have paid them the salary for not working at our home, where from they have taken all their food and everything? So these are something which will be a part of our national service, because they are also a fellow citizen. वो भी हमारे जैसे नागरिक हैं, लेकिन परिस्थितियां ऐसी हैं कि वो अपने काम पर नहीं आ पाए. माइग्रेंट लेबरर्स, सो all these, so who did work for them or who performed the duties at that time? Because this is a fundamental duty, and as I told you, this is not justiciable or enforceable in a court of law. तो कोई ये नहीं कह सकता कि आपने पैसा नहीं दिया, या आपने उसको खाना नहीं खिलाया, या आपने अपनी कोई नेशनल सर्विस इस तरीके से रेंडर नहीं की, या आपने कोई दवाइयां वहां नहीं भिजवाई. So this is not punishable, but as a citizen, this is our duty to defend our country and to render national service whenever our nation demands for. It is related to our military services, it is related to the pandemic type situations, which is bringing very chaos in the society. हर तरीके की मुसीबतें जो लोगों पर आई और आ भी रही हैं, इसमें डोमेस्टिक वायलेंस भी बहुत बड़े, इसमें बेरोजगारी भी और ज्यादा बढ़ी, इसमें माइग्रेंट लेबर्स को भी नुकसान हुआ, बहुत तरीके के नुकसान हुए. तो ऐसी स्थिति में क्या हम अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म कर पाए या नहीं कर पाए? दिस इज वन ऑफ द फैक्टर विच वी मस्ट ऑल बी अवेयर अबाउट. हमको जानना चाहिए, हमें समझना भी चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं. एंड रिलेटेड टू दिस अनदर ड्यूटी दैट टू promote the harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people. ये भी हमारी एक फंडामेंटल ड्यूटी है कि हमें अपने आसपास एक भाईचारे की तरीके से अपना व्यवहार करना चाहिए, कॉमन स्पिरिट के साथ लोगों से मिलना चाहिए, एक हार्मनी, एक कहना चाहिए कि एक मिलजुल कर उसको प्रमोट करना चाहिए कि amongst the people of India, सभी लोगों के साथ. एंड we should have the respect for different religions, different languages, different regional and sectional diversities, because we are the citizen of a country which is diverse in nature. अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं, अलग अलग रीजनल के रिलीजन के लोग रहते हैं, अलग अलग रीजन्स में लोग बटे हुए हैं, उनकी अपनी अलग भाषाएं हैं. They have different religious and linguistic diversities, they have different sectional diversities. So what is our fundamental duty is that we have to promote the harmony, we have to have the spirit of common brotherhood among all the persons. Would this controversy regarding hijab is going on? How many of you are following with that?
So is this to promote the harmony? Is this to promote the spirit of the common brotherhood in a country which is having different religions, different languages, different regional and sectional diversities? So this is all we are facing, we are witnessing. But this is our fundamental duty. Nobody can say that the particular duty is being violated. So this is our own consciousness. This is our own awareness that what we can do, we should do for that. Then we have to, as a citizen, renounce the practices which are derogatory to the dignity of women. This is a fundamental duty, and this is mostly exclaimed and proclaimed duty to renounce the practices derogatory to the dignity of women. So on the one hand, we have to promote the harmony and common brotherhood, and we have to renounce the practices which are derogatory to the dignity of women. So this duty is towards the women. This duty is not towards the women of a particular religion. This is duty which is not about the women which is belonging to a particular region. This is the duty towards the women as a whole. That may be from any caste, any community, that may belong to any religion. So if we are renouncing any, we are performing any practices which are derogatory, which are related to the dignity of the women, then again, it is not a part of the fundamental duties, because it says that to renounce the practices. हमें ऐसी practices छोड़नी होंगी जो महिला की गरिमा के विरोध में जाके उसके लिए डेरोगेटरी हैं, उसके साथ कुछ अनर्थ करने की कोशिश कर रही हैं. So when these duties were put in the constitution as a fundamental duty, so we were having in our mind our old concept of vasudhaiva kutumbakam, जो हम कॉमन हार्मनी की बात कर रहे हैं, जो हम इस तरीके की कॉमन ब्रदरहुड की बात कर रहे हैं, तो हमारा क्या इथोस था? हमारा तो वसुधैव कुटुंबकम की बात करते थे, हम तो पूरे विश्व की बात करते थे, हम किसी एक रीजन की बात नहीं करते थे, हम केवल हिंदुस्तान की बात नहीं करते थे. तो ऐसी स्थिति में जो ये इंडिया का एक नोबल एक्सोरेशन जिसको हम कह सकते हैं वसुधैव कुटुंबकम, that entire world is a family, that has been a unique part of the Indian ethics, that has been the unique part of the Indian culture from several years, and that has been nourished also, we can say, in the lap of Bharat Mata, our own country. But the indecent practices, the immoral practices which are relating to the attire of the person, of a particular person, कि वो क्या कपड़े पहनेगा, वो कैसे कपड़े पहनेगा, is this we the people who have to decide that what one should wear? It is we that we have to decide all these things in the name of the uniformity. So there can be uniformity only which is related to the countries or the nation's sovereignty and security. There should be some of the reasonable restrictions, but not like this. So my point is not just either I'm not in favor or against of this controversy, but this is a point that we have a fundamental duty. We have to promote the harmony. We have to bring the spirit of common brotherhood. We have to renounce the practices which are derogatory against the women. And we all have to do all this in the manner of what we say tolerance, because there was something which was related to the intolerance also just 2-3 years back. So all this should go. ये सब अगर चलेंगे तो जो डाइवर्सिटी है हमारी वो अपने आप में कहीं ना कहीं उसका जो एक रिजल्ट है वो कहीं ना कहीं कुछ गलत आने की उम्मीदें हो सकती हैं. So besides that, we have also the duty to value and preserve the rich heritage of the country's composite culture. Now, हमारी जो ड्यूटी है कि हमारा जो एक कंपोजिट कल्चर है हम उसको प्रिजर्व करें, हम उसकी वैल्यू करें. हमारे जो मॉन्यूमेंट्स हैं, जो हमारे बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिस पर हमें गर्व है कि ये हमारे देश के हैं, तो उन चीजों को हमें किस तरीके से प्रिजर्व करना है, कैसे वैल्यू करनी है, दिस इज ऑल्सो अवर फंडामेंटल ड्यूटीज. हाउएवर
you see that this growing intolerance in the Indian society, which is reflected by the cases of cow vigilantism or mob lynching, and all these things, they are taking part. And democracy cannot establish the deep roots in the society until the citizens they don't complement the fundamental rights and their duties. मेरा right है तो मेरी duties भी है. अगर राइट मैं एनफोर्स करा सकती हूँ, ड्यूटी एनफोर्स नहीं करा सकती हूँ, बट मुझे उसको एज ए कोरिलेटिव ड्यूटी, मुझे वो ड्यूटीज भी परफॉर्म करनी है. सो माय ड्यूटी इज दैट आई हैव टू प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर ओन कंपोजिट कल्चर. जो हमारा कल्चर है उसको हमें किस तरीके से प्रिजर्व करना है, दिस इज माय ड्यूटी टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द natural environment, which is including the forest, lakes, rivers, वाइल्ड जो हमारी वाइल्ड लाइफ है, जो हमारे लिविंग क्रिएचर्स हैं, उनके लिए हमें कैसे कंपेशन उनके प्रति होना चाहिए. सो काउ विजिलेंटिज्म इज देयर, एंड दैट्स हाउ वी सी दैट we should improve our duty for having this compassion towards the living creatures also. And the founding fathers or the authors of the constitution, they were the men of the great values and vision, and they all visualized all these things. And that's why we see that these fundamental duties, which are the part of the constitution, which we as a citizen have to follow. So we have to protect कि हमारा जो environment है, natural environment है, हम उसको कैसे safe रखें, उसको कैसे improve करें, हमारे जो फॉरेस्ट हैं उनको किस तरीके से इम्प्रूव करें, कैसे उसको आगे बढ़ाए, कैसे उसका डेवलपमेंट करें. बट बिकॉज वी हैव सो मच पॉपुलेशन नाउ, द फॉरेस्ट दे आर बीइंग कट, एंड इन द नेम ऑफ द डेवलपमेंट द पीपल दे आर बिकमिंग लैंडलेस. वहां पर बिल्डिंग्स बन रही हैं, वहां पे बड़े बड़े मल्टी companies are in here. So all these things are there, but our duty is that we have to preserve and we have to protect, we have to improve the natural environment, we have to improve and protect the forests and lakes, rivers, whatever it is, we have to do that. Then one of the important duty which every citizen is having, the development of scientific temper, humanism and spirit of inquiry and reform. So, as I told you that India is a country where there were different types of the customs, different types of the usages also. बहुत तरीके के रूढ़ी और वो क्या प्रथाएं वो सब चलती थी यहाँ पर, और अंधविश्वास अपने आप में बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ रहता है. कहीं कहीं पर ज्यादा होगा, कहीं पर कम होगा. मैं भी कुछ दिन पहाड़ों में रही हूँ, मैंने देखा है कि शायद यहाँ से थोड़ा ज्यादा वहाँ पर इस तरीके की चीजों को फॉलो किया जाता है. So our duty is that we have to develop the scientific temper. हमारा जो अपना एक टेम्पर है, हमारा एक जो ख्याल है, जिस तरीके से हम काम करते हैं, वो साइंटिफिक बेस्ड होना चाहिए. हम को इस तरीके के जो रूढ़ी प्रथाएं हैं, जो अंधविश्वास हैं, उस पर विश्वास करते हुए किसी चीज को नहीं करना है. उसको हमें एक स्पिरिट जो है इंक्वायरी की, हर चीज के पीछे हमें एक इंक्वायरी हो, साइंटिफिकली हमें उसका कब क्यों कहाँ, इस तरीके से एक साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन. एंड देन टू सेफगार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी, दैट किसी तरीके के वायलेंस में कोई जो हमारी पब्लिक प्रॉपर्टी, और सबसे ज्यादा जो पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान होते देखा है वो क्या है कि रेलवेज में और रोडवेज में बसों को आग लगा दी, बिल्डिंग्स में आग लगा दी, रेलवेज में आग लगा, उसमें आग लगा दी है, या उसमें तोड़फोड़ हो रही है. इस तरीके की जो चीजें हैं, जो हमारी पब्लिक प्रॉपर्टी है, उसके साथ किसी भी तरीके से वायलेंस के द्वारा कोई नुकसान ना हो, उसको सेफगार्ड करना. दिस इज आवर फंडामेंटल ड्यूटी. So these are the things which I suppose that as an individual, as a citizen, one can only do something little. But public property does not include only this railway or traffic or these things, but जो छोटी छोटी चीजें, हमारी पब्लिक प्रॉपर्टी क्या है, जो एनर्जी है, जो हमारा वाटर प्रिजर्वेशन है, दैट इज ऑल्सो द पब्लिक प्रॉपर्टी. तो अगर रास्ते में कहीं जा रहे हैं आप लोग, अपने कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, कैंपस में जब निकलते हैं, अगर देखते हैं कि टैप कोई खुला हुआ है, पानी बह रहा है, दिस इज योर फंडामेंटल ड्यूटी टू सेव द प्रॉपर्टी फॉर द फ्यूचर जनरेशन. तो आप उसको बंद कर सकते हैं. अगर कोई बेमतलब की एनर्जी लाइट जल रही है, देन यू कैन
you can shut that off also, आप उसको बंद कर सकते हैं. And this is what you can also teach to your students कि अगर कहीं पानी खुला हुआ है, बह रहा है, वेस्ट हो रहा है, लाइट खुली है, unnecessary यूज हो रही है, तो आप उसको as a public property you can safeguard that, and this is a fundamental duty of every citizen. Then the 10th duty, which was there in the original constitution, is just to strive for excellence in all these spheres of individual and collective activity. कि जो हमारा नेशन है वो बहुत हायर लेवल पर पहुंचे, वो लगातार राइज करता रहे, वो लगातार उन्नति करता रहे. हम ऐसे काम करें जिससे कि हमारे अचीवमेंट्स जो हैं वो बहुत अच्छे हों, एक्सीलेंस की तरफ जाए. तो कुछ इस तरीके की एक ड्यूटी भी फंडामेंटल ड्यूटी है, एंड दैट इज रिलेटेड टू ऑल ऑफ यू. Because being researcher, being academician, this is your duty to take your nation to reach or to have that, you should do that endeavor so that you can, nation can achieve those higher levels which the other countries are having. आज की डेट में because आप लोग एकेडमिया से जुड़े हुए हैं, तो कई बार आप देखते होंगे जो रैंकिंग होती है, यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग होती है, उसमें आप देखते हैं ये यूनिवर्सिटी नंबर 1 पे है, ये 2 पे है, ये 3 पे है. अगर कोई इंटरनेशनल रैंकिंग है तो इंडिया की कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं होती है. अगर नेशनल रैंकिंग है तो कुछ ही यूनिवर्सिटीज हैं जो रैंकिंग में 1 2 3 इस तरीके से आती हैं. बाकी के बहुत सारे इतने 800-900 यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पर 24-25 हजार के लगभग कॉलेजेस, 45 हजार के लगभग जहाँ पे कॉलेजेस हैं. तो ऐसे में एक्सीलेंस की अगर बात होती है कि वो कैसे अचीव किया जाएगा, सो दिस बिकम्स ए फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ ईच वन ऑफ अस, that we should do something as an individual or as our collective activity also, so that our nation should also reach to that higher level, and that should constantly rise. वो लगातार बढ़ना चाहिए, नहीं आज कुछ अच्छा कर दिया तो ये हमारा पहुंच गया इसके बाद खत्म. No, that should be for all the time to come, constantly, लगातार. And this excellence is not confined only to the academia, but in sports also, in other research works also, in business also, कि हर क्षेत्र में, in all these spheres, हर क्षेत्र में कुछ ऐसा काम करें हम लोग कि जो हमारा नेशन है वो ऊपर की तरफ बढ़े, वो उसको नई नई चीजें प्राप्त हो इंटरनेशनल लेवल पे. तो जहाँ तक हम देखते हैं कि मेडिसिन में, इंजीनियरिंग में या कई और ऐसे फील्ड्स हैं, आईटी में बच्चे हमारे यहाँ के, हमारे जो लोग हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं, सो दैट नेशन इज अचीविंग दैट हाइट्स ऑन दैट लेवल बिकॉज ऑफ द excellent work of the persons who are the citizens of the country. Similarly, this is the duty of all of us, so that we should do something, we should work or to give our excellence in all the spheres, and this is a duty. So initially in the first amendment, that is 42nd amendment, 10 duties have been incorporated in the constitution. But after that, in 2002, by 86th amendment, one more duty has been incorporated, and that duty is not for the citizen. जो 10 duties मैंने आपको बताई वो तो सब citizens के लिए है, लेकिन जो 11वीं ड्यूटी 2002 में लागू की गई, इसमें वो जो थी वो पेरेंट्स के लिए और गार्जियंस के लिए थी, सो दैट दे शुड प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू देयर चिल्ड्रन एंड टू देयर वार्ड्स. अगर गार्जियन है तो उनके अंडर में जो वार्ड्स आते हैं उनके लिए, और जो पेरेंट्स हैं उनको अपने चिल्ड्रन के लिए. 6 से 14 साल के बीच के जो बच्चे हैं उनको इस तरीके की अपॉर्चुनिटी दें, सो दैट दे मे हैव देयर एजुकेशन, उनको शिक्षा का अधिकार प्राप्त हो सके, उनको ऐसे अवसर प्रदान कराए कि वो शिक्षा ले सके. बिकॉज in our country you see that unemployment is writ large, population is so high, so big, and there is poverty also. So for that matter, many of the children, they were just doing labor work. वो child labor बहुत बड़ा हुआ था, अभी भी उतना कम तो नहीं हुआ है, लेकिन कहीं कहीं कुछ सुविधाएं हुई हैं. तो इस तरीके से कि बच्चों को 6 साल से 14 साल के बच्चों को कैसे स्कूल में पहुंचाया जाए, इसके लिए किसकी ड्यूटी रखी जाएगी. सो
this duty has been inserted of the parents and the guardians कि वो अपने बच्चों को 6 से 14 साल तक के जो है उनको स्कूल पहुंचाने के अवसर प्रदान करें, उनको शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिए कुछ ऐसी व्यवस्था करें कि वो लोग शिक्षित हो सके. So this is how you see that 11 duties are there in the Constitution of India. But as I told you that these duties are not enforceable, and that's why 2002 में एक कॉन्स्टिट्यूशन को रिव्यू करने के लिए एक कमीशन बना, और उस कमीशन ने रिकमेंडेशन दी दैट दीज ड्यूटीज शुड बी मेड एनफोर्सेबल, कि इनको एनफोर्सेबल बनाया जाए इन ड्यूटीज को. बट that could not be meted out, कि वो जो recommendation था वो fulfill नहीं हो पाया, and still we find that these duties are not enforceable. But the recommendations of the commission were also that duty to vote at election भी होना चाहिए, जो democratic process में है, ये भी एक duty जुड़ जाना चाहिए. But still we don't have any duty like duty to vote at the election. और इलेक्शन में अगर ड्यूटी टू वोट होता, क्योंकि एनफोर्सेबल नहीं है, तो जो परसेंटेज है आज की डेट में अगर आप देखें कि 30%, 40% और बहुत ज्यादा हुआ तो 60%, इतना अगर वोटिंग हो रहा है, तो ऐसे में जहाँ पे 5-5 और 6-6 कॉन्टेस्टेंट खड़े हुए हैं, कितने परसेंट वोट पर जीतकर वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट में काम कर रहा है, हमारी गवर्नेंस के लिए वो कानून बना रहा है या उसमें वो काम कर रहा है. So this should be a duty of every citizen to vote at the election, so that maximum percentage of the voters would be there, and then they can have a good governance also. तो उस level पर भी इस तरीके की duty को incorporate करने का एक recommendation दिया गया था. That was not materialized till now. But otherwise, whatever duties are there, yes, Sana Rahman. You are mute, beta. Ma'am, I have this query. Like when just as you said, like the fundamental duties are not enforceable by law, whereas we have these new legal duties coming up, which I think will be enforceable by law since they are legal. Yeah. So technically, the legal duties become more fundamental than the fundamental duties. I mean, if you I feel like it is that way, but that's my perception. Fundamental is something which is the base of anything. Fundamental is something which is important. Legal duty is, as I told you, that is having the sanction of law, that is created by law, which is enforceable, and for the violation of which one can move to the court of law. That is the legal duty. तो ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, इसको जब रेकमेंड किया गया शुरुआत में, जब इसको इनकॉर्पोरेट करने की बात हुई थी, उस समय भी ये रिकमेंडेशन थी कि इसको एनफोर्सेबल बनाया जाए, सो दैट टू द एक्सटेंट कि इफ द पर्सन आर नॉट following or observing these duties, they are not performing these duties, then they should be punished also. उनके ऊपर punishment भी लगाया जाए. But because the time period when these duties were inserted in the constitution, that was the time when the नेशनल इमरजेंसी वाज इन वोग. उस समय नेशनल इमरजेंसी थी 75 से 77 वाली, और 76 में ये आया. सो एट दैट टाइम इट वाज कंसिडर्ड दैट इनिशियली वी शुड कम अप विद द ड्यूटीज व्हिच आर नॉट एनफोर्सेबल, क्योंकि अगर उस समय इसको एनफोर्सेबल बनाया जाता, मे बी द रिजल्ट्स वुड हैव बीन डिफरेंट. बट आफ्टर दैट द रिकमेंडेशंस आर बीइंग गिवन. 2002 में जो कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू कमीशन आया, उसने भी रिकमेंड किया कि इसको एनफोर्स कराया जाए. But now this is dependent upon the party in power, that what do they do, whether they would be going for amending this or not. And particularly some of the duties are of the nature which cannot be enforced by the court of law. For example, जैसा मैंने कहा कि हमें हर स्फेयर में एक्सेलेंस शो करना है, तो ईच एंड एवरी इंडिविजुअल सिटीजन की ड्यूटी कैसे हम एनफोर्स कर सकते हैं. हमें हर किसी में साइंटिफिक टेम्पर लाना है, तो कैसे हम इस ड्यूटी को एनफोर्स करा सकते हैं. सो दीज ड्यूटीज आर समथिंग व्हिच आर सेड टू बी आइडियल्स व्हिच एवरी सिटीजन हैज टू फॉलो एज अ ड्यूटी. And because it is the part of the constitution, so the word fundamental has been qualifying this duty. It has been there in the constitution. And ma'am, I have one more query, like regarding the moral duty which
which has become the legal duty when concerning the maintenance of the parents. So ma'am, in this context, is this applicable to those children who move out of the nation or who get the citizenship of the other nations? So in that case, parents who are staying behind in India, and if all their children move out, so then also, I mean, there is this kind of loophole. Yeah, 2007, this is a 2007 act. In 2019, there have been certain amendments in that act also. So as to give a wider aspect of the definition of the parents and the children. उसमें अब तो इन लॉज को भी जोड़ा गया है, ग्रैंड पेरेंट्स को भी जोड़ा गया है, whomsoever they are, if they are related, they are earning, they have the duty to maintain the parents or the grandparents also, to in-laws also. सबके लिए वो ड्यूटी हो चुकी है. जहां तक फॉरेन में रहने वाले वहां की नागरिकता की बात है, then we have also the provision in the constitution that if there is any law and if it is a duty of the person concerned, if it is not being performed, then if it could come under the control of the government of India, then that law can be enforced. तो वो लॉ उसमें एनफोर्स कराया जा सकता है, क्योंकि वो बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स यहाँ पे रह रहे हैं, जब पेरेंट्स पे लॉ लग रहा है तो उन पर भी लगेगा, and that will cover under the control of the government of India. Otherwise, all the laws are applicable within the territory of India. But there is a word which is used that and in the control of the government of India. इसमें एक related case भी था कुछ सरोगेसी को लेकर, बाहर में था, वहां पर वो क्राइम नहीं था, यहाँ पर उसको किस तरीके से लाया गया. So that was under the control because the lady was Indian at that time. So this can be done, but this is a case of interpretation through the court of law. Okay. Thank you, ma'am. So on all various duties, as you said that whether this is a legal duty or not, so some of the duties, the law have been made. So now that has become a part of the legal duty also. For example, we have the emblem and names of the improper use की हम कोई एक्ट हमारा बना हुआ है कि जो हमारे राष्ट्रीय एम्बलम्स हैं, चाहे वो जो अशोक की लाट है या इस तरीके के, तो उसको हम कॉपी या उसको हम रीनेम अपने तरीके से नहीं कर सकते. कोई कहे कि हमारा ABC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और उसका नाम कुछ रख दिया जो गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूशंस है, पार्लियामेंट, लाइक दैट. So that cannot be done. So the first duty is covered by this act. Then we have a flag code of India also. हमारे पास फ्लैग का कोड है कि हमें उसकी कैसे रेस्पेक्ट करनी है. We have a protection of the Civil Rights Act also, Unlawful Activities Act, Representation of People Act, Environment Protection Act कि हमें environment को कैसे प्रोटेक्ट करना है, उसके लिए एक्ट बना है. तो जो उसमें प्रोविजन है वो लीगल ड्यूटी की तरीके से काम करेगी. ठीक है. उसी तरीके से राइट टू एजुकेशन एक्ट है कि अगर जो बच्चों को नहीं भेज रहे, राइट टू एजुकेशन एक्ट है, उसका वायलेशन अगर होगा देन देयर इज अ लीगल ड्यूटी. सो देयर इज ऑलवेज द केस ऑफ द पनिशमेंट एंड पेनल्टी. फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है हमारे पास, सो दैट वी हैव टू सेव द फॉरेस्ट एंड टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट. वी हैव द फॉरेस्ट एक्ट ऑल्सो, सो वी हैव टू सेव द फॉरेस्ट. वी हैव द वाइल्ड लाइफ एक्ट ऑल्सो, जो हमें लिविंग क्रिएचर्स के लिए, एनिमल्स के लिए हमारे को अपना उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी ड्यूटी है. सो वी हैव द लीगल एक्ट्स आल्सो फॉर दैट. सो मेनी ऑफ द ड्यूटीज व्हिच वी फाइंड इन द फंडामेंटल ड्यूटीज चैप्टर, दोज हैव बीन आल्सो enacted through the act, and now they also have become the legal duties, so that if there is any violation of these duties, so not as a fundamental duty but as a legal duty, action can be taken against. Municipality Act is also there, जैसा कि मैं उनको सजेस्ट कर रही थी कि म्यूनिसिपैलिटी के थ्रू भी वो कंप्लेंट की जा सकती है. So that is all there which can be done. And besides that, judiciary in India that has also come forward for saving these fundamental duties. कि नेशनल एंथम की अगर हम बात करते हैं तो एक श्याम नारायण चौकसी थे मध्य प्रदेश से, उन्होंने एक केस फाइल कर दिया कि जो नेशनल एंथम है, पहले पिक्चर हॉल में जब पिक्चर जाते थे तो वहां पे बजता था, अब नहीं बजता है, तो उसको दोबारा से शुरू किया जाए. तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर भी दे दिया कि जब पिक्चर हॉल में जाएंगे तो पहले जब पिक्चर शुरू होगी उस समय और जब बाद में खत्म होगी उस समय
नेशनल एंथम प्ले किया जाएगा, वहाँ पे राष्ट्रगान बजाया जाएगा, एंड everyone should have to pay respect and everyone should have to stand for the respect of the national anthem. और उस समय लोग आते जाते हैं तो उस समय जो दरवाजे हैं, एक्सिट एंट्री गेट, वहां को भी लैश कर दिया जाएगा, कुंडी लगा दी जाएगी. बट that judgment was reviewed because that was impacting the persons who were not able to stand. For example, जो disabled हैं, जो खड़े नहीं हो सकते हैं ऐसी स्थिति में. और एक उपहार सिनेमा का केस हुआ था दिल्ली में, जहां पर सारे बोल्ट लगे हुए थे एक्सिट एंट्री गेट पे, कोई निकलने की जगह नहीं थी और वहां पे आग लग गई. सो hundreds and hundreds persons they were killed there. स्टैम्पेड, एक भगदड़ मची और उसमें उन लोगों की जान चली गई. So in order to avoid these things, now that is the national anthem is to be played with full respect. तो इस तरीके की चीजें हैं कि respect देना है, because that is not enforceable, but that has been made to certain extent and enforceable by the courts, by the parliament, by enacting some of these laws. So environment pollution, that is becoming a cause of great concern. So we need to know the importance of the fundamental duties. We should also make our students aware about the environment concern. This is a fundamental duty. Then we should also inform and make them aware about their right to education as a fundamental duty. We should also incorporate in our children the duty towards the community, towards the society, towards the nation. कि जो भी हमारी ड्यूटीज हैं वो हम अपने तक ना रखें, बल्कि हम उसको आगे भी बढ़ाएं और उस पे हम काम करें. अब जैसे स्वच्छ भारत मिशन चल रहा है, दो इट्स ए पॉलिसी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, but that is a duty that we are preserving the national monuments, we are preserving our nation. हम उसको किस तरीके से आगे ले जाएं अपने हेल्थ हाइजीन के आधार पे. तो these are our duties which we should perform, and we should also inform the others that these are their duties and they should take care of, they should perform these duties. And that's how we can say that we are having certain idea about the duties, and we have to perform these duties. Only then we can claim ourselves as the good citizens of the nation. Otherwise, the things will go like it is going, and we have to be very, very good citizen, and in that way we can perform all these duties without any ambiguities, without any further things. So finally, what we know is about the fundamental duties, that they are not just moral obligations, they are the duties. So we should take them as the duties. We should promote that duties in the spirit of patriotism, as being the citizen of the country. हम भारत के नागरिक हैं, तो उस तरीके से हम इन ड्यूटीज को आगे बढ़ाएं, उन ड्यूटीज को इस तरीके से हम परफॉर्म करें. Only then we can achieve the very mandate of this program, which is related to the learnings on human rights and fundamental duties. And this is how you can also be performing your rights and duties as a good citizen of the country. So with these words, I would like to stop myself here, and I would be happy if there are any questions and queries. Yeah. आपने बीच में कुछ बताना चाह रहे थे, किसी बुक का रेफरेंस देके.